नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट वाला। मैं हूं सतीश कुमार दुर्शेट्टी, फैकल्टी ऑफ मेजरमेंट्स। आप सब लोग को स्वागत कर रहा हूं हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द यूट्यूब सीरीज इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स। जितने लोग लाइव में हैं मुझे एक बार वॉइस कंफर्मेशन कर दीजिए, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर या नहीं। ओके, अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो आप फटाफट जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो बेटा। अगर लाइव में है तो मुझे एक बार थम्स अप दिखाइए, ऑडियो वीडियो का कंफर्मेशन कर दीजिए प्लीज। लास्ट क्लास में हमने एनर्जी मीटर पर डिस्कस किया था। अभी एनर्जी मीटर के बाद हम जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स के ऊपर। ओके, मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स को टॉपिक को जो जो डिस्कस किया था। हमने इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स भी कंप्लीट कर चुका है लास्ट क्लास में। एक्सक्लूसिवली वी हैव कंप्लीटेड द पावर मेजरमेंट। पावर measurement we have discussed in the last class. In the power measurements we have done the 2 watt meter method. 2 watt meter method we have discussed, and after that we have gone for the energy meter. Okay, K is equal number of revolutions is equal to K into energy, and we have discussed the gate PYQs also. आज का क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स में क्या क्या आएगा देखेंगे ध्यान से। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स के लिए आपके लिए क्या क्या टॉपिक्स आएगा एक बार ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स में क्या क्या टॉपिक्स आएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज CRO। ओके, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पर हम क्या मेजरमेंट करेंगे? टाइम मेजरमेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करेंगे एंड फेस मेजरमेंट भी करेंगे। ओके, सो दीज आर द वेरियस पैरामीटर्स। ओके, सो CRO के ऊपर हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं मैं लिख रहा हूं इधर। टाइम, फेस एंड इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। ओके, टाइम, फेस, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट्स हम डिस्कस करते हैं इधर इसके ऊपर। नेक्स्ट इसके बाद हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है उसमें लिसेजियस पैटर्न्स। सो लिसेजियस पैटर्न्स आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया। इसके बाद क्यू मीटर एंड इसके बाद DVM डिजिटल वोल्टमीटर भी डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द फेमस टॉपिक्स एंड गेट PYQs कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे फास्टली। ओके, इसके ऊपर रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम्स और रेगुलरली आने वाला क्वेश्चन है। जितने लोग आपको क्लैरिटी है रिजोल्यूशन, एक बार मुझे कंफर्मेशन कर दिया, क्योंकि लास्ट ईयर हमको एक क्वेश्चन भी आ चुका है रिजोल्यूशन के ऊपर, एक क्वेश्चन भी आ चुका है। ओके, जल्दी कंफर्मेशन कर दीजिए बेटा फटाफट। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। थोड़ा लेट हो गया आज। गुड मॉर्निंग टू ऑल। 7 मेंबर्स आर वाचिंग द सेशन। आई नो हु आर वाचिंग। गुड मॉर्निंग ऑल। एक बार मुझे रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। अगर रेडी है तो हम स्टार्ट करेंगे सेशन को।
cathode ray oscilloscope. So first one we are starting with CRO. So what is the basic purpose of CRO? CRO का working क्या है? देखो cathode ray oscilloscope, what it will do it. So the basic purpose of cathode ray oscilloscope is it is electronic instrument which is used to analyze the waveforms to test the components. So what are the waveforms parameters? It can measure the peak voltage, or it can measure the peak to peak voltage. It can measure the peak to peak voltage. Next, it can measure the frequency. It can measure the time period. It can measure the frequency. It can measure the phase shift. It can measure the time period also. So these are the various parameters it can measure. So if you see the block diagram of the CRO, this is a block diagram of the CRO. The CRO block diagram involves here, first of all, there is an electron gun. This electron gun is going to emit the electrons of the fastest electrons, fast running electrons. So this is coated with a particular material called barium strontium material. Okay, na? So this is the barium strontium material. So barium strontium will allow the fastest electron to come out. So from this particular topic, so what is the important question that we are going to get here is the electrons are going to come with a particular principle called what emission? Thermionic emission. The principle is thermionic emission. Because of the heating effect, the electrons are going to come. And इसके बाद हमको 3 sets of anodes है. The 3 sets of anodes को हम बोलते हैं pre-accelerating anode, accelerating, focusing anode and accelerating anodes. So if you see what is going to happen the pre and this setup. So this is the pre-accelerating anode and इसके बाद focusing anode and इसके बाद accelerating anode. This particular 2 will be maintained at the same potential 1500 volts and this is maintained at 500 volts. There is a potential difference is maintained so that the dispersed electrons are going to be focused in a single beam. At the entry the electrons are like this, but the time they come here the electrons are going to enter like this. The time they come here the electrons are going to come like this. The electrons are going to come like this. Okay, so now they are going to hitting on a beam like this. Okay, so this is the point. All of you are there, my dear students? Yes, stretch man, कहाँ से हो आप? So now if you see the deflection we call it as electrostatic deflection. क्या बोलते हैं उसको हमने? Electrostatic deflection बोलते हैं. In CRO we are using electrostatic deflection. In CRO we are using electrostatic deflection. In television we are using the electromagnetic deflection. याद में रखो ये. Electrostatic deflection, electromagnetic deflection. Next. So very important formula here is the deflection. That electron whichever is enter into the deflection plates, it is going to have a deflection. The deflection का formula के ऊपर हमको questions आने वाली है. वो questions कैसे आते हैं उसके अनुसार उसका formula को कैसे remember करना वो trick बोल रहा हूँ मैंने. So these are the deflecting plates. So if you see the length of the deflecting plate is this. So this is the length of the deflecting plates LD and the distance between the plates. So this is the D. The distance between the plates, this is the D. This is the distance between the plates, that is the D, my dear. Okay, and this is a center 0. Okay, and from this there is a deflection is going to happen. जिंदा हो जीवन में हो मुझे एक बार रिप्लाई दीजिए. And this is the theta and this is the deflection D, capital D. And from the center of this particular screen to this main screen, that is capital L. Okay, and this distance between the plates is small d and the length of the deflection plate is LD. And at what velocity the electrons are entering from the accelerating anode, that is a VOX. डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का वोल्टेज है D. दिस इज द टेस्ट सिग्नल. जो हमारा टेस्ट सिग्नल है, जो हमारा टेस्ट सिग्नल से, so the test signal से जो वोल्टेज आ रहा है, so that voltage is given to op amp. So with some delay
after some delay, then it is given to this particular deflection plates. This particular deflection plates ED. Okay, so this is our unknown voltage. So according to this voltage only the signal amplitude jumps. ये है हमारा test signal. For example, let us take this a diode. Okay, so let me take this is a supply voltage here. Okay, so from this diode, so this is a plus minus. So this is what the delay, and this is a ED, and now it jumps. So this is deflection D. Okay, so this particular from the length to the center to this, the total length I am taking as capital L. Okay, so this is what we call as electrostatic deflection. Electrostatic deflection. Okay, so electrostatic deflection है. So इसको कैसे काम करना? So there is an expression here. अगर आप लाइव में है तो मैं बताता हूँ. Anybody is there in the live? एक बार मुझे रिस्पॉन्स दीजिए बेटा. Noted? Yes, have you noted this? 7 members लाइव में देख रहे हैं, मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिए बेटा. डिफ्लेक्शन का फार्मूला. So if you see the deflection का फार्मूला, क्या है डिफ्लेक्शन का फार्मूला? So the deflection formula D is given by this formula. So first let me explain you the parameters. This is the EA, that is the voltage of pre-accelerating anode in volts. So this is the EA, accelerating anode voltage, at which this voltage, this is the EA, accelerating anode voltage. Next, E is the charge of electron in coulombs. M is the mass of electron in kg, 9.1 10 power minus 31 kg. And Vox is the velocity of the electron when entering into the deflecting plates in meter per second. Next, ED is the potential between the deflecting plates in volts. ED is the potential that you applied in. This is what our unknown. उसको हम find out करना पड़ता है. Okay. Then small d is the distance between the plates. Okay. LD, this is a small LD. Sorry, length of the deflection plates in small. So this is a small LD. So length of the deflecting plates, LD, and capital L is the distance between the screen, and the mid of the deflecting plates. Next, capital D is the deflection of the electron beam on the screen in the y direction. So now, if you see the deflection formula is given like this: L LD ED by 2D EA, and deflection sensitivity, if you take ED LLD by 2D EA, and deflection factor G is equal to 1 by S. So deflection factor G is equal to 1 by S.
So 2D E available. So these three formulas के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकता है. So हमेशा मैं बोलता था लाइव क्लास में इसका टेक्निक टू रिमेंबर. So Lilly to Delhi. So that is a technique to remember this formula. I said remember, I said technique सोना है. So Lilly to Delhi. So this is the Lilly to Delhi. LLD ED by 2D EA. So deflection unit centimeters. L is this मेरे दोस्तों. Capital L is this. This is the capital L. From the center to this distance, capital L. Next, small L is the length of the deflection plates. Small d is the distance between the plates. Okay, na? Small d is the distance between the plates. ED is the voltage applied. EA is this. So always remember the input test voltage is ED. हमको ED चाहिए. जो सिग्नल का वोल्टेज आप मेजरमेंट करना चाहते हो उसका वोल्टेज चाहिए, लेकिन सिग्नल को ड्राइव करने के लिए आप एक्सेलरेशन वोल्टेज चाहिए. सो दिस इज यू आर गिविंग, दिस इज द अननोन, इट इज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट. जो भी सर्क्यूट के पास हमको मेजरमेंट करना चाहते हो वो ही है. ओके, चलो नाउ आई एम गिविंग लिली टू दिल्ली. सो नाउ आई एम गोइंग टू गेट द फार्मूलास हियर. आईआईटी दिल्ली क्वेश्चन 1998 का सवाल है. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो मेक इट फास्ट. जितने लोग लाइव में हैं, मुझे मैं पोल भी यूज कर रहा हूं, फटाफट इसका आंसर कर दो बेटा. 35 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं मैं. क्लास होने के बाद आपको नोट्स मिलता भाई. क्लास होने के बाद आपको नोट्स मिलेगा. सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर. हाउ मेनी ऑफ यू आंसर दिस क्वेश्चन? लेट अस सी द लीडर बोर्ड. कोई भी नहीं है लीडर बोर्ड पर. लीडर बोर्ड पर कोई भी नहीं है. सो सी हियर. सो इफ यू सी नाउ, दिस इज he has not given the picture completely. You have to use some common sense. This he has given L means. So now if you take the length of the total plates, the length of the total plates will be 2L. So this particular length will become 2L. And this is 0 to this is minus t by 2, this is plus t by 2 means this total will become as D. And from this to this, that is given as LS. So the deflection formula is given as what? I told you, Lilly to Delhi. And हमेशा हमारा डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ईडी. ईडी ऊपर होना है, ई नीचे होना है. तो मुझे क्या पूछ रहा है वो? ही इज आस्किंग द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी मींस आउटपुट बाय इनपुट. दिस इज द फार्मूला LLD बाय 2D. ये दिस इज द फार्मूला. ये है हमारा फार्मूला. Okay, so now if I am taking this LLD by 2D EA, this is a formula. But actually, as per the question, you have to substitute now. Here, capital L means length of the deflection plates from the center to this. That will be LS. Length of the deflection plates, if you take length of the deflection plate is not L, it is 2L. So that is the technique here. By 2, the distance between the plates, that is small d. And accelerating anode voltage is given as VA. VA. So now what is the answer? So here
2 gets cancelled मेरे दोस्तों. The right answer will be ls into l by 2 gets cancelled. So d into va होगा. So this is what we call as sensitivity. Do you understand? ls into l by 2d dva. Okay, chalo. Now let us go for the Lissajous pattern. For that we have to understand the modes of the CRO. If you see the modes of the CRO, what are the modes of the CRO? The CRO works in YT mode and XY mode. That means there are 2 sets of deflection plates now. So the 2 sets of the deflection plates, vertical deflection plates and horizontal deflection plates है. So for the vertical deflection plates हमने क्या signal दे रहे हैं, for horizontal deflection plates हमने क्या signal दे रहे हैं. Okay. Vertical deflection plates, horizontal deflection plates को हमने क्या क्या signal दे रहे हैं. According to that particular, the output will be dependent. अगर आपने वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को आपने हमारा टेस्ट सिग्नल दे रहे और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को हमारा टाइम बेस्ड सिग्नल दे रहे. टाइम बेस्ड सिग्नल इज आल्सो रिक्वायर्ड ना, क्योंकि आपका सिग्नल टाइम पर भी आना है, ओनली वर्टिकल नहीं रहता है. साइनसॉइडल का वेवफॉर्म ऐसा रहता है ना. सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आल्सो वी शुड गेट टाइम बेस्ड सिग्नल. So for horizontal deflection plates you are giving a time based signal, and for the vertical deflection plates you are giving a test signal. So what is the generally used time based signal? The generally used time based signal is nothing but a sawtooth wave. So the generally used time based signal is the sawtooth waveform we are using like this. So this is with respect to, okay. But whereas for the vertical deflection plates, what signal you are giving? There are 2 modes now. Based upon that, that thing will work out. So suppose if you are giving test signal like sinusoidal, then that is what we call as YT mode. In the YT mode, for the vertical deflection plates, we are giving this Vm sin omega t. What we are giving? We are giving the Vm sin omega t. And for the horizontal deflection plates, we are giving the time based signal. Next, to go for the XY mode, for the vertical deflection plates, we are giving the sinusoidal signal. For horizontal also, we are giving the sinusoidal signal. Okay. So, but the point here is the both are not having the same phase. The both are not having the same phase. So here it is going to become as vertical deflection plates का signal है. So this one, and horizontal deflection plates का signal है this one. So horizontal deflection plates का जो है वो phase में रहेगा. This will be having some phase shift. So then accordingly we are going to get the Lissajous pattern. So Lissajous patterns are the symbols. So this is for the this particular. Okay, na? So this is for this particular situation. This is a different story and this is a different story. Okay. So now let us go for the different application. 11 members are watching. कोई भी reply नहीं दे रहे. मैं समझ गया आप reply देना नहीं चाहते हो. क्लास पर reply देना है यार. आपको फ्री में इतना अच्छा वैलिड कंटेंट आ रहा है. कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन होना है, रिस्पॉन्स होना है. ये तो मिनिमम कटसी है. आपको फ्री में मिल रहा है, चलो आप पढ़ाओ, मैं इधर ही सुनता हूँ. एक ऐसा अच्छा नहीं है. कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देना पड़ता है क्लास में.
पेड क्लासेस को, फ्री क्लासेस को डिफरेंस है, इवन दो इट्स अ बिजनेस, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। फैकल्टी को रिस्पॉन्ड करना है। यस कश्यप बट गुड मॉर्निंग। Sir, I got Lissajous pattern question previous exam. What is the difference between XY mode and YT mode? Hari Srinivas, very good question. XY mode में input signal अलग है, YT input अलग है, inputs different. XT YT mode inputs different. See, ध्यान से देखो बेटा, अपने क्या दे रहे हैं YT mode में, क्या दे रहे हैं, देखो देखो, see here, this is the YT mode. See what actually you are giving, what you are going to get, XY mode, YX mode. So if you see the YT mode, this is the YT mode. In YT mode, for vertical deflection plates, horizontal deflection plates, vertical deflection plate we are giving test signal, for horizontal deflection plate we are giving the sawtooth signal. For vertical deflection plates we are giving the test signal, for sawtooth signal for the horizontal deflection plate. This is the horizontal deflection plate signal. So this is the horizontal deflection plate. इसका मतलब है अगर आपने केवल टेस्ट सिग्नल को ओनली फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को दे रहे हैं, हमेशा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट को टाइम बेस्ड सिग्नल दे रहा है, देन दैट इज कॉल्ड वाईटी मोड. इन वाईटी मोड दिस इज द वाई एक्सिस सिग्नल, दिस इज द एक्स एक्सिस सिग्नल. सो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी टेस्ट सिग्नल है वही एज इट इज आएगा. सीआरओ स्क्रीन पर जो ही टेस्ट सिग्नल है वही एज इट इज आएगा. अगर वाईटी मोड पर आपने साइनसॉइडल वेव दे रहे, एक्सटी मोड पर भी, एक्सप्लेन पर भी आपने हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स को भी आपने साइनसॉइडल दे रहे. दैट मींस suppose for the both the plates, if you see the both the plates, so this is the scenario. So for the YT plates and for the XT plates, so this is Y with respect to T and this is X with respect to T for both the plates. But लेकिन ये X plates पर जो सिग्नल है वो करेक्ट फेज में है, and this can be anti phase or this can be like this or this can be like this. This is having some phase shift, different phases. So then what can happen? So that means Y of plates को जो सिग्नल दे रहा है, that is A sin omega t plus phi, and X will be always within phase to the origin. समझ में आपको? There is another possibility, phases may be equal, frequencies may be different.
So that is what that fundamental difference between YT mode and XP mode. Yes, Kashyap क्वेश्चन पूछ रहे, देखो कश्यप इज ए रैंकर एंड आई कंग्रेचुलेट कश्यप, बट आपको गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एग्जाम में क्लियर हो चुका है, मैंने मैसेज देखा आपको. सो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ आवर यूट्यूब क्लासेस और आवर पेड क्लासेस. बच्चों को कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए and you can share your interview experience also. Now if you see the phase difference for the Y plates, vertical deflection plates, I am getting A sin omega t plus phi. Horizontal deflection plates, A sin omega t. So X is equal to A sin omega t, Y is equal to A sin omega t plus phi. So if the phase angle is equal to 0, I am going to get this as A sin omega t, Y is equal to A sin omega t. So now I am going to get this as a straight line passing through the origin. Okay, so this is a proof, but the proof is not required, just try to remember. For example, if I am taking phi is equal to 0, दोनों in phase है, x is equal to a sin omega t, y is equal to a sin omega t है, अगर omega t 0 substitute करो, then x is equal to 0, y is equal to 0, omega t 30 substitute करो, a by 2, same आ रहा है ना, so we are going to get a straight line pattern. अगर दोनों के बीच में दो साइनसॉइडल सिग्नल्स अप्लाई कर रहे, ओके, x को y को दो साइनसॉइडल सिग्नल अप्लाई कर रहे, लेकिन दोनों के बीच में फेज शिफ्ट 0 है, then आपको स्ट्रेट लाइन आएगा. अगर see here, if the phase shift, I have different cases for you, so that cases I will show you like this. See here, if the phase shift is equal to 0 or 360 degrees, you are going to get a straight line. If the phase shift is less than 90 or 330 degrees, you are going to get an ellipse. So this is the ellipse. This ellipse will be running in the clockwise direction. This is a clockwise direction ellipse. Next, 45 315 also we are going to get an ellipse. So this is also a clockwise direction. Okay, but remember always clockwise, anti-clockwise both are possible. Clockwise for less than 180 degrees, anti-clockwise for more than 180 degrees. Remember this, क्योंकि इसमें पिक्चर में 315 भी है, so इसमें clockwise आएगा इधर, इसमें anti-clockwise आएगा, याद में रखो. The quadrants are 1 and 3 quadrants. Okay, so these are 1 and 3 quadrants. These are clockwise. This is the anti-clockwise. Got it? So straight line के लिए clock anti-clockwise जरूरत नहीं. But if you go for 90 degrees, 60 degrees also. For 60 degrees you are going to get clockwise. For 300 degrees you are going to get anti-clockwise. So quadrants 1 and 3. Quadrants 1 and 3. And the most important thing for 90 degrees. For 90 degrees we are going to get a clockwise circle. For 270 degrees we are going to get an anti-clockwise circle. So these are circle. So circle के लिए कुछ coordinates नहीं रहेगा. So आपको याद रखने की कोशिश करो. समझ में आपको? जिंदा हो जीवन मोह कश्यप जी. चलो, अगर आपने 120 240 है तो आपको again ellipse आ गया. So this is clockwise. This is ellipse. Sorry. This is anti-clockwise, and the quadrants are 2 and 4. These quadrants are 2 and 4. 2 and 4. The second quadrant is 4. And 150, 250 same like these next. 180 को again straight line आएगा, and 180 के बाद again 270 to 360 again anti-clockwise 360 को line. So पूरा सा पूरा अगर देखो तो क्या होगा ना, आपको final picture ये है. So this pattern you have to remember for your examination. So इसके ऊपर बहुत सारे टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, अभी कश्यप जी बोल रहे हैं कहाँ क्वेश्चन आ चुका है. Yes or not? Yes, Kashyap. Thank you, sir. Sir, your way of teaching measurement sir, very helpful, and I solved almost all questions of measurement and sensor. Thank you, Kashyap ji, very much. Excellent. All the best, and I wish you all the best. Okay, please make a note of these diagrams. Good morning, Sathish. कहाँ से हो?
Excellent. Have you noted? Sir, phase difference is 9 degrees, but amplitude is different. In that case also, sir, yes. Yes. Lissajous pattern are for measurement of phase and frequency only. Remember this. Lissajous pattern, phase and frequency measurement only. Have you noted this? Chalo. Now let us go for this particular case of frequency measurement. So what is the frequency case? So frequency को कैसा measure करना? कश्यप जी आपको पता है frequency को कैसे measure करना? So if you see the frequency, then the ratio of frequencies of signal applied to the deflection. At this time what I am doing now, for the vertical deflection plates and for the horizontal deflection plates, what I am giving, see ध्यान से देखो, the y of t is equal to and the x of t is equal to, both are same phase, same phase है, लेकिन the phase shift अलग है. This is omega 1, this is omega 2. They are both are same phase. That means if you see the signals, ध्यान से देखो, if you see the signals like this, and I suggest कश्यप जी आप research पर जाओ. अगर जॉब में ज्वाइन हो गए भी, आपको स्टडी को रुकना नहीं. You have to focus on your studies also, क्योंकि आजकल अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है करियर में. अगर आप अपडेट नहीं है तो आउटडेट हो जाएगा. The immediately once you have joined a company, you got a good job, good secured job. Security is most important in present corporate culture. So job security होना है, क्योंकि हमेशा हम 100% experience, 100% efficiency दे नहीं सकते. हम human beings है ना, हमको इतना accuracy, we are not instruments, we cannot be that much accurate. We cannot work every day 9 to 4. So definitely we need some security of the job. So that is a very good to see that in a very early age आपने security job, गुजरात सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट जॉब, व्हाटएवर इट इज, अ सिक्योर्ड जॉब. लेकिन आपका जर्नी इधर स्टॉप नहीं होना चाहिए, आपका जर्नी बहुत दूर होना चाहिए. ओके, आपका जर्नी बहुत दूर होना चाहिए. यू हैव टू थिंक अपडेटिंग टेक्नोलॉजीज, बहुत सारा टेक्नोलॉजी सारा गेट जो पढ़ रहे हैं आप एकेडमिक्स की वजह से पढ़ रहे हैं, बस ये आउटडेटेड है ना. अभी सीआरओ में भी कितना वेराइटीज आ गया बाहर मार्केट में. ड्यूअल स्कोप ले आ गया, ट्रेसिंग आ गया, डिजिटल ऑसिलोस्कोप से बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं मार्केट में. इसमें मैं बच्चों को क्या बोलता रहा, हमेशा अपडेट कर दिए, जो भी आपको अवेलेबल है उसमें अपडेट कर लो, ज्यादा नॉलेज को लेना नहीं है. सो अगर आपने गुजरात स्टेट में ज्वाइन होने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी में जाने के बाद बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर रहते हैं. आपने कल मुझे क्वेश्चन पूछ रहा था पीएलसी एंड स्कैडा के बारे में, वेरी गुड. बट पहले तो आप ज्वाइन करो, ज्वाइन होने के बाद आप ऑनलाइन में भी पीएलसी स्कैडा ले सकते हैं. वो यू चूज वन पीएलसी विच इज रनिंग इन द कंपनी, मे बी सीमेंस पीएलसी, मे बी हनीवेल, मे बी जी फोनक, मे बी अलन ब्रैडली, जो भी पीएलसी अवेलेबल है तो पीएलसी यूज करो, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करो, स्लोली स्लोली इसमें सर्टिफिकेशन कर दो. एक डोमेन में सर्टिफिकेशन कर दो, एक डोमेन को चूज करो, वो डोमेन पे जर्नी स्टार्ट करो. समझ में आपको? या बट एट द सेम टाइम टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर डाइट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बी हैप्पी, स्पेंड वैल्यूएबल टाइम विथ योर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी, take care of some yoga practice, take care of your diet. This is also very important. पूरा 24 घंटे को 8 घंटे काम के लिए, 8 घंटे फैमिली के लिए, 8 घंटे स्लीप के लिए, फैमिली में 2 घंटे आपका स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपका बॉडी माइंड सोल का डेवलपमेंट. क्योंकि आप आज का जॉब्स जो है, जो भी हम जॉब कर रहे हैं, एवरी जॉब वॉट एवर इज ए गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो, एवरी जॉब इज लॉट ऑफ स्ट्रेस इज देयर. सो टू ओवरकम दैट स्ट्रेस, definitely we should have some spiritual entity in our body. Okay, so that's what I want to suggest. I wish you all the best. I am congratulating on getting the good job Gujarat Electricity Board. हमारा सुजल पटेल सर भी गुजरात से है, so आप सुजल पटेल सर का सिग्नल्स क्लास को भी देख सकते हैं. Nice to see you. So if you see this, now what I am telling now, this is the X plates, these are Y plates. X plates का जो सिग्नल है नॉर्मल साइनसोइडल सिग्नल है, and Y plates का जो सिग्नल है in phase. Remember when you are getting for the frequency ना, आपने फ्रीक्वेंसी के बारे में जाना, फेज तो कुछ शिफ्ट नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट है. देखो इस फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट है. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाई इज इक्वल टू सम n नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ x. आई एम राइट और नॉट? अगर आपने दिस टाइप ऑफ सिग्नल सीआरओ को दिया है, देखो इस समय हमने एम्पलीट्यूड एंड फेज को नहीं कंसीडर कर रहे, समझ में आपको? So then we are going to get a pattern. So for that pattern, how to find out? So when you are getting like this, wy by wx, fy by fx is
number of horizontal tangencies by number of vertical tangencies. This is one formula. Number of horizontal tangencies by number of vertical tangencies. This is one formula. And this is number of intersection Lissajous patterns by number of intersection of Lissajous. This is another formula. So please remember these two formula. Fy by Fx is number of horizontal tangencies by number of vertical tangencies. ये एक formula है. Next, Fy by Fx is equal to number of horizontal intersection points divided by number of vertical intersection points. This also one. Got it मेरे दोस्तों? अगर आपको क्लैरिटी है तो मैं जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम्स के पास जाता हूं. So please see these questions one by one. So we'll solve the questions one by one. Two methods से मैं करने की कोशिश करता हूं. So two methods. So I am giving first intersection method. So this is intersection method and second one is the tangencies method. So tangencies method में आपको कैसा करना भी वही मैं देखता हूं. So this is the tangencies method को भी मैं दे रहा हूं. देखो. So please go through these pictures of tangencies. कितने tangencies method. Okay. So if I am going for this tangencies method, so this is the tangencies method. This is the tangencies method. Okay, got it? Please see this. Please go through the two methods. Two methods मैंने back to back दे रहा हूँ. Two methods देखो मैं 1 minute में आता हूँ. 1 minute.
Yes. What is the answers? His answers are matching. His answers are matching, कश्यप जी. तो दो मेथड्स से आप करवा दीजिए, दो मेथड्स का आंसर चेक करो. टू मेथड्स. See here, how to understand these two methods. If you are going for tangencies method, so what are the horizontal tangents? It's a completely closed loop picture. For the closed loop picture, we have to take the tangencies four sides. So this is one, this is one. These are tangencies 1, 2, and these are tangencies 3. This is the 4. So Fy by Fx here is equal to Fy by Fx here is equal to number of horizontal tangencies divided by number of vertical tangencies. This horizontal tangencies is equal to, see always the formula kaise yaad rakhna. So this for y this is horizontal, for x vertical, opposite hai, for y horizontal. So that is a formula differentiation आप याद रखो. For y axis के लिए horizontal tangents, horizontal कितना हो गया 4 हो गया, vertical tangents कितना हो गया, these are the vertical tangents is बेटा 1 and 2 हो गया इधर. So 4 by 2, 2 is to 1. That means what? Frequency of y is equal to 2 times of frequency of x. That means the signal that you have applied for the vertical deflection plates is a 2 times of the horizontal signal. That's how it moves on. Fy is equal to Fx. Okay, chalo. So now here intersection method देखो. Intersection method को कैसे करना है? Intersection method में आपको ये clarity होना है that particular intersecting line should not cross through a common line, common point. You cannot draw a common point here मेरा बेटा, इधर you cannot draw, this is गलत है. You cannot draw like this is also गलत है. समझ में आपको? So you should cross the intersection line like this and another intersection line like this. So you should cross like this. So this will be 1, 2, this will be 1, 2, 3, 4. So what I can do here, Fy by Fx is equal to number of horizontal intersections by number of vertical intersections. So here it will be 1, 2, 3, 4 by 2. So दोनों methods आप use कर सकते हैं, आपको reference के लिए comparatively आप compare. दो methods मैं जो बोल रहा हूँ, दो methods. Why I am telling these two methods? एक method से जो आपको answer आया गया, that answer you can verify with the other method for your confirmation. Okay वाह? चलो. Now let us do this question. ध्यान से करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है. లింగాల సతీష్ ఉన్నావా? ఒక పిల్లోడికి జాబ్ వచ్చిందిరా, గవర్నమెంట్ జాబ్ గుజరాత్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డులో. నీకు ఎప్పుడు వస్తుంది స్వామి? 2014 నుంచి చూస్తున్నా నిన్ను. ఎక్కడ జాబ్ చేస్తున్నావు ప్రజెంట్ లింగాల సతీష్? కొందరు కొట్టున్నానా? గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటున్నావు కదా, కొట్టు తొందరగా. So like this I am getting the signal.
प्लीज डू इट, बोथ मेथड से करके देखो। क्या है आंसर बताओ यार, आर यू कंफर्मिंग द आंसर? सी हियर, फर्स्ट मेथड इंटरसेक्शन मेथड, देखो इंटरसेक्शन मेथड से देखो क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शंस 3, vertical sorry tangencies, this is tangencies, vertical tangencies this, so this will be what now, 1 2 3 4 5 6, so horizontal tangencies, vertical tangents देखो आपको 3+3 होना चाहिए, इधर 3+3 होना चाहिए, 1 + 1 + 1, so 3+, मैंने एक ही लिया, so 1 + 1, here 1 2, here 3 4, so 2 + 2, so anyway it will become 6/4, that becomes answer will be 3/2, answer will be final answer 3/2. इंटरसेक्शन मेथड देखो, इंटरसेक्शन मेथड ये वाला है इंटरसेक्शन मेथड, so this is the intersection method, so if you see the intersection method, if you see the intersection method, if you see the intersection method, so this is the intersecting line, this is another intersecting line, so अभी क्या होगा पूरा, इधर 1 2 3 4 5 6, here 1 here 2 here 3 here 4, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है नहीं, कंफर्मेशन हो गया, चलो दैट्स इट, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द CRO, बस। Now I am going for digital voltmeter, one of the important topics from the DVM. So DVM is also one of the important topic. DVM is also one of the important topic. उसके ऊपर भी हमने क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। Yeah. So what is the purpose of DVM, digital voltmeter? Many times, many papers में क्वेश्चन आ चुका है DVM, very important topic, digital voltmeter. नोट कर दो बेटा।
So if you see the basic properties of the DVM, it is suitable for DC voltage, AC voltage. How it is possible? ADC. Actually, there is no question of digital voltage. In the history, we don't have the DVM. గుజరాత్ గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసిన వచ్చింది, అతను ప్రిపేర్ అయ్యాడు, తెచ్చుకున్నాడు, అంతే. మన ఏపీలో ఎన్నో వ్యాకెన్సీస్ ఉన్నా రిలీజ్ చేయడం లేదు. ఎవరిది ఫాల్ట్ అంటారు సార్? ఈసారి తెచ్చుకుంటలే సార్. ఏపీలో వదిలితే వస్తుంది నాకు కూడా. అరే నేను కంపేర్ చేస్తున్నాను కాదురా सतीश भाई, मैं आपको नहीं कंपेयर कर रहा हूँ. मैं क्यों आप एपी को लिमिट हो गया? क्यों आप एपी स्टेट को लिमिट हो गया? आंध्र प्रदेश स्टेट को क्यों लिमिट हो गया? मैं बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, मैं और कुछ ट्राई करो. I don't want to make, because we are my Telugu student, I am worried about you, because since 2018-19 I am watching you from Unacademy, from Gate Academy. When I was teaching also, I am watching you. That's why I am expecting the news from you when my Lingala Sathish will get the job. Shift the field, बहुत लेट हो गया. Okay, so current, resistance, transducer output. Okay, సరే చూద్దాం. ఈసారి వచ్చినప్పుడు మనకు ఖచ్చితంగా చెప్పాలి, మరి ఫోన్ చేసి మరి చెప్పాలి, ఎక్కడ ఉన్న స్వీట్ బాక్స్ తీసుకుంటా. High input impedance advantage. Okay, these all are theory here, but the most expected topic here is the 3-digit display. See here. So this is the 3-digit display. So what we call is as 3 DVM. 3 DVM. Don't take it personal, Sathish. Just నా లోపల బాధ నీకు అట్లా చెప్పిన రావాలి జాబ్. ఓకే, A position, B position. So what is this A position, B position? Agar position is here, this is the range selection switch. Agar position is here, agar position is here, agar position is here, what is the range? That is 0.0002 to 0.999. And if the position is here, the 0.002 to 9.99. So this is a 3-digit display, my dear students. So now if you see the range here, the range is 0 to 1 volt. 3 digits. So these 3 digits, full digits, each digit range is 0 to 9. Each digit range is how much? 0 to 9. When I say full digit बोलो तो 0 to 9. Full digit is equal to 0 to 9. So this is 0 to 9, this is 0 to 9, this is 0 to 9. So now if the position selection switch is here, then the 0.00 to 0.999. So the total counts are 1000. The total counts are 1000. And the minimum selection, minimum increment is 0.001. So the range is this 0 to 1 volt. If the position selection switch is here, then the range will be 0 to 10 volts. Here also the counts are 1000. Now if the position selection switch is here, the last value is 99.9. So this is 0 to 100 volts. Okay, so the counts are again 1000. Okay, so here the resolution is 0.1. Have you observed the least increments? What is happening here? For a range of 1 volt, 1 millivolt, 0.01 volt, 0.1 volt. So what do you understand the resolution point?
Done. Now here most expected question here is the resolution. So the resolution part you have to be very careful. Once again I am telling you, if I am taking a 3-digit display, the resolution of 3-digit is actually 1 by 10 power 3, that is 0.01. But remember, the range matters. The range matters. The range matters. Is range of 1 volt. If you take the range of 1 volt means 0.002 and a position selection switch. If the position selection switch is here, the range will be 1 volt. So that's why the best formula for resolution is maximum voltage by maximum count. So if the position selection switch is here, the maximum voltage is 1 volt, the count will be 1000. If the position selection switch is here, the maximum voltage will be 10 volts. If the position selection switch is here, the maximum voltage will be 100 volts. तो इसके अनुसार वो चेंज होते जाते हैं. समझ में आपको? So like that it is going to be changed, my dear. Okay. So now what I'm writing here, see here. Sensitivity is the least one. Resolution, least resolution को हम sensitivity बोलते हैं. So मैंने different categories को आपको दिया था. देखो इधर. See first case, suppose if I'm taking 0 to 1 volt range. 0 to 1 volt range बोलते तो position selection switch here होगा. So 0.002 0.001, the maximum value is 0.999. So the range कितना हो गया? 0 to 1 volt हो गया. The counts कितना हो गया? 1000 हो गया. So resolution over the range of 1 volt, resolution over the range of 1 volt. Now if you see the position selection switch here now, if the position selection switch is here in this box, then what happens? This will become 0.00 is the minimum, 9.99 is the maximum. Okay, so maximum voltage by maximum counts 10 by 1000 होगा. So the resolution in this situation is 0.01 volt होगा. So resolution over a range of 10 volts कितना आ रहा है? 0.01 volt आ रहा है. Next, suppose if I am taking the position selection switch here, so that will be 0.0. This is 99.9. So the maximum voltage by maximum count, that is 100 by 1000. So that will become as 0.1 volt होगा. Actual resolution of 3-digit is always 1 by 10 power n, but when you mention the range, resolution over the range is maximum voltage by maximum count. You try to understand in the question, if the voltage is given, you have to go for it, maximum voltage by maximum count. So sensitivity is always treated as resolution of the DVM for the least range. जो भी least range है उसको value को हम sensitivity बोलते हैं. In this particular scenario, 0 to 1 volt is the least range, उसको हम sensitivity बोलते हैं. Do you understand?
डन 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 डन। ओके, आपको ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो देन से सो 3 डिजिट 1 मिली वोल्ट, दिस इज 10 volts, 3 digit 100 volts। ओके, सो दीज आर व्हाट द रिजोल्यूशंस, हम उसको क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। सो जो टॉपिक मैं बोल रहा हूं ना उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। सो दिस रिजोल्यूशन, resolution of 3 digit over a range of 1 volt or a range of 10 volts or a range of 100 volts। Done। Now 3.5 dBm के पास जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। 3.5 dBm में क्या है ना, ये 3 फुल डिजिट्स है। दीज आर फुल डिजिट। एफडी 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 बोलो तो फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है रे भैया, फुल डिजिट है। दिस इज हाफ डिजिट। फुल डिजिट का रेंज ऐसा होता है, दिस इज 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9। ये होगा केवल 0 to 1 होगा, केवल 0 to 1 होगा। समझ में आपको? 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9, 0 to 1 होगा। So now if you see the ranges 0 0 0 0 9 9 9, so the counts are 1000। next 1 0 0 2 1 9 9, the counts are 1000, so total counts 2000 होगा। Why? Because this will move with respect to 0 first। 0 से शुरुआत करो, 0 0 0 0 0 1 0 1 0, like that you go 9 9 तक आएगा। नेक्स्ट इसको चेंज करो 1 को, 1 0 0 2 1 9 9 हो गया। सो टोटल काउंट्स कितना हो गया रे? टोटल काउंट्स 1000 प्लस 1000 2000 हो गया। एंड रेंज भी डबल हो गया। देखो रेंज 0.002 0.999 1.002 1.99 आ गया ना। सो रेंज भी डबल हो गया, रेंज भी डबल हो गया, काउंट भी डबल हो गया। सो दैट्स व्हाई नाउ व्हाट इज द रिजोल्यूशन हियर? एल बोलो तो रिजोल्यूशन हियर, what is the resolution of 3.5 digit 1 volt? So here what I have to take, resolution of 3.5 digit, resolution of 3.5 digit over a range of 1 volt. If you see over a range of 1 volt, if you see, what is the formula I told? The maximum voltage divided by maximum counts, maximum voltage divided by maximum counts. What is the maximum voltage? The maximum voltage is 2 volts. The maximum counts is how much? 2000। Again आपको 1 millivolt ही आएगा, ध्यान से सुनो। The only thing is why? Because least count में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता ना। आपका रेंज तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन द लीस्ट काउंट 0.001 होगा फर्स्ट स्टेप इंक्रीमेंट। 0.00 से नेक्स्ट इंक्रीमेंट 0.001 होगा। 0.0 से नेक्स्ट इंक्रीमेंट 0.01 ही होगा। 0.0 से इंक्रीमेंट 0.1 ही होगा। समझ में आपको? सो ये स्टेप इंक्रीमेंट में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेंज एंड द टोटल काउंट्स में फर्क पड़ता है। क्लियर आ गया? क्लैरिटी आ गया माइंड में? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है भैया, मिस मत करना।
नोट कर दिया भैया, एनी डाउट्स? ओके, चलो लेट अस मूव for the next 3.5 dBm. So this time the position selections which is moving with the positions which is here, it is 0.002 0.999. If the position selections which is here, that is 0.002 9.99. So please try to understand how the things are moving. The printing mistake hai bhaiya. So this is the resolution. So this is resolution of 3.5 digit or range of 1 volt. Sorry, this is 3 volts only na. Okay, it's a, sorry. This is he is comparing. I think he's comparing the slides misorder mein. Okay, 3 digit or a range of 1 volt, 3 digit or a range of 10 volts. Next, 3 digit over a range of 3 digit over a range of 100 volts. Now for 3.5 देखो, 3.5 के लिए 3.5 digit के लिए क्या है, रेंज बदल गया, रेंज तो बदल गया. सो 3.5 digit के लिए 2 volts maximum है. सो इसमें आ रहा है 2 volts पे 2000. सो दैट विल बिकम 1 millivolt आ रहा है इधर. प्रिंटिंग ज्यादा है. So this is 1 millivolt. सुपर वाह, इतना मिस्टेक्स टाइपिंग कर रहे हैं यार. This is 1 millivolt. नेक्स्ट इधर देखो, 0 to 10 volts is count increase to 0 to 20 volts हो रहा है. सो रिजोल्यूशन कितना जा रहा है देखो, रिजोल्यूशन ऑफ 3.5 digit is the resolution of 3.5 digit over 20 volts by 2000. So 10 millivolts हो गया. नेक्स्ट रिजोल्यूशन ऑफ दिस इज रेंज तो बदल गया 200 by or a range of 200 by 2000 millivolts. So that's how the resolution is. All of you are there? Try to answer this question. Try to answer this question, my dear. Try to answer this question.
of dVm is used for the measurement of voltage. Find the resolution of the instrument. So क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से जल्दी, कोई भी आंसर नहीं दे रहा है. So ऑप्शन ए रिजोल्यूशन पूछ रहा है. So resolution पूछ रहा है ना. So resolution is equal to, he has not given any range here. So that in that situation you can take 1 by 10 power n. In that situation, if not range is not mentioned, you can go for this. So 1 by 10 power 3 होगा. So the number of full digits 0.001, that is 1 millivolt. Second question देखो, second question में क्या दे रहे हैं? How would be a voltage of 14.53 displayed on a range of 10 volts? So range is given as 10 volts. This is very, very important. Actually, when the initial range is 10 volts, first of all, what is the 3 dVm picture? So if you see the 3 dVm picture, so these are the full digit. This is the half digit. This is what our half digit. So this is a half digit. So this is 0 to 9. This is 0 to 9. This is 0 to 9. This is 0 to 1. Okay, ba? 0 to 9, 0 to 9, 0 to 1. So how would be the range of 14.53 volts is displayed in 10 volts range? 10 volts range बोलो तो where is the pointer first of all? 10 volts range बोलो तो where is the pointer? So the pointer should be here. Then what happens? Starts from 0 first, 0.00, next 0.01. It goes like that up to 09.99. Next comes 1, 0.00, goes up to 19.99. So the range of this scenario will be like this: 0.002, 09.99, goes up to 10.002, 19.99. See, this is the half digit. Half digit will be like this only. Half digit हमेशा ऐसा ही रहेगा. Remember this point. This is 19 point. Half digit will be like this only. Got it? Half digit will be like this only. एक काम करता हूं, मैंने सेपरेट करता हूं उसको. So this is a half digit, 0 point, where it's starting 0.0. It goes up to then like this. Okay ba? So maximum voltage is 20 volts. 10 volts range दिया है. Because of the 3.5 digit, we are going to get that. So now how this 14.53 displays on a 10 volts range? Sure, it will be displayed as 14514.53, no issue. But if you go for 100 volts range, 100 volts means what? 199.9. So how it will be displayed? So it will be displayed as 014.5. That's it. Why? Because if you go for 100 volts, it will be how much? 199.9. The position selection will be coming here. The position selection will be coming here. 00.00, 00.00, 099.9, 100.0, 199.9, 199.9 आएगा, 199.9 आएगा, 199.9. So इधर 0 आएगा. That's it. समझ में आपको बेटा? These are the different varieties of questions. Response please.
गॉट इट कश्यप जी? सो प्लीज practice all these questions. Read one question. Okay. So please answer this question. So with this I am closing. इतना अच्छा ब्यूटीफुल कंटेंट मैंने दिया आपको, मिस मत करना. लिंगाला सतीश, are you there?